हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज फाइलम पोरिफेरा। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग पोर्स ऑन देयर बॉडी। इनका मतलब है उनकी बॉडी के ऊपर जो कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल्स, like the very first example is the cypha, second one is the euspongia जिसको हम बाथ स्पंज भी बोलते हैं, the third one is the euplectella, this is a venus flower basket। सो जब भी हम इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब कि हमेशा वाटर में ही मिलेंगे। और ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर मराइन, और बहुत ही फ्यू होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में मिलेंगे। एंड दीज ऑल टुगेदर आर कॉल्ड एज स्पंजेस। और जब भी हम सिमेट्री के बारे में बात करते हैं, दे हैव अ सिमेट्री, दे हैव एन asymmetrical body is present. And whenever we talk about the body, it consists of many cells which is having little division of labor. That is why they are also called that they are having colony of different types of cells. और जो एनिमल्स होते हैं ये सेडेंट्री होते हैं, एक ही जगह में मिलेंगे। एंड द बॉडी दे आर हैविंग न्यूमरस पोर्स ऑन द body surface. So whenever we talk about the diagram, here you can see the sponges, here you can see the minute openings are present. These openings are called as ostia. और ostia एक ऐसी ओपनिंग है जहाँ से वाटर जो है वो एंटर करता है इनसाइड द बॉडी। और अंदर साइड जो है आपको एक कैनाल नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड एज स्पोंगोसील कैविटी। इट मीन्स जब भी वाटर ऑस्टिया से एंटर करते हैं दे आर एंटरिंग इनटू द स्पोंगोसील, एंड नाउ द वाटर exit out through a large opening that is called as the osculum. So here you can see the osculum it is present. So इस तरीके से जो है वाटर का आपको एक तरीके से कैनाल सिस्टम नजर आता है जो कि फर्स्ट एंटर करता है ऑस्टिया से, फिर बाद में एंटर करेगा इनटू द स्पोंगोसील, एंड द थर्ड वन इज द फ्रॉम द ऑस्culum इट इज गोइंग टू एग्जिट आउट। तो जब वाटर एंटर करता है थ्रू द ऑस्टिया, along with the water food is also going to enter through the ostia. इसका मतलब है this is how the absorption of the food is going to takes place inside the spongocoel. और जो भी cells हैं वो waste भी produce करेंगे, so waste is going to release out through the osculum along with the water, and this is how the excretory products they are going to exit out. So here the excretory, this is how the excretory product they are going to excrete out through the body. So here further when we talk about the spongocoel they have some cells. So spongocoel it is a cavity which is lined by a special flagellated cells, और ये जो cells हैं they are having flagella. So these kinds of cells are called as choanocyte cells, or you can say these are called as collar cells. And because of the beating action of the flagella present in the choanocyte cells, a current is developed, and this is how there is movement of the water it is seen. Further जब हम बात करते हैं बॉडी की, sponges the body it is supported by calcareous or they are made up of the siliceous spicules. On the body surface there are some spicules are present. Spicules जो है वो तो या तो calcareous होंगे या तो siliceous होंगे, और इवन यहाँ पर आपको जो है प्रोटीनीशियस जो है स्पॉन्जिन फाइबर्स भी देखने मिलेंगे। And this is how the body structure it is present. Here in this diagram you can see the choanocyte cells are present. These choanocyte cells are, you can see these are also called as collar cells, which are present at the lining of the spongocoel. They are having the flagella, due to which a beating action is seen, and this is how beating of flagella creates a water current. Further, when we talk about the reproduction, the sponges they can reproduce asexually as well as sexually. So first we will talk about the asexual reproduction. The reproduction it can take place through fragmentation or through the gemule formation. So this is how a particular gemule look like. So जब भी हम sponge के बारे में बात करते हैं, here the inner lining of the sponge, here they produce a gemule like structure. और जेम्यूल स्पंजेस तभी बनाते हैं जब भी अनफेवरेबल कंडीशन देखने मिलती है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब देयर इज स्कैरसिटी ऑफ फूड, और देयर इज एड एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर हाई या तो फिर टेम्परेचर लो होगा, या तो वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो। सो दीज कंडीशंस आर कॉल्ड एज अनफेवरेबल कंडीशन, और इसी कंडीशन के दौरान जो है ये लोग जेम्यूल फॉर्मेशन करते हैं। Here this is how the inner lining they produce gemmules, and here the gemmule it exit out through the osculum.
out of the body. And here in the gemule you can see there are some living cells. These are called as archaeocyte cells. Here this is the inner membrane, this is the outer membrane, and there is an opening that is called as micropyle. So this gemule, they are able to survive in any kind of adverse environmental condition. So this is one of the type of an asexual reproduction. Next, here the sponges, they can also reproduce by the fragmentation. They can also reproduce by the help of the fragmentation. So इस तरीके से just उनका fragment अगर cut हो भी जाता है, so they can give rise to a new sponge. And they also have the power of regeneration. It means जो lost body parts, they can again be regained. Further, next we'll talk about the sexual reproduction. Sexual reproduction जो है हमेशा आपको gametes produce होते हुए नजर आएंगे. So here you can see how the sponges, they are producing the egg, the sponges, they are producing the sperm, and here the sperm and the egg, they are going to get fused up, and this is how you can see the fertilization is seen. And here as the fertilization is seen, the formation of embryo will takes place, and embryo will give rise to the larva, and here this larva further development is going to give rise to a new sponge. So this is how fertilization is seen. और जो fertilization होगा, that fertilization is the internal fertilization. इसका मतलब है fertilization takes place inside the body, इसलिए इसको internal fertilization कहा गया है. और जो development है वो indirect डेवलपमेंट है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने मिलता है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है व्हेन एवर देयर इज अ लार्वल स्टेज इज सीन, इसका मतलब है डेवलपमेंट ये जो है वो है इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट देखने मिलता है. सो दिस इज हाउ हियर यू कैन सी द लार्वा. और जो लार्वा होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एम्फीब्लास्टुला लार्वा. इट इज सीन इन द स्पंजेस विच बिलोंग टू द फाइलम पोरिफेरा. So this is how was all about the Phylum Porifera, and here the video ends, and thank you very much.